तो कैसे आप लोग? आज आपका वापस स्वागत है एलन बिग 2 के एपिसोड नंबर 2 में। जिस तरीके पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा किस तरीके से जो कि सांग एंडरसन होता है और उस नाइटिंगेल की बच्ची जो कि एकदम से जग के उठता है और उसको हम मारने जाते हैं कोल्टन लेक की सिटी में। उधर हम दिल देते हैं, फिर हमका रास्ता खुलता है और उसको जाकर हम ढूंढ देते हैं। फटी फटी में ढूंढते हैं लेकिन ढूंढ देते हैं। लेकिन उसके बाद हमको मिलता है कौन? गैस हु? एलन वेग, जो ये सब कहानी लिख रहा था। और हम उसको मिल चुका है और उसके आय की कहानी अब हम इस गेम प्ले में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। Where did you go? अरे All of a sudden the radio stopped. आ गया working केसी, and आ गया केसी। Flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, Ah, say hello ye to wohi hai. Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. ये बोल रही है कि मतलब ये जो नदी की पानी की बाढ़ खत्म हो गई है, यहाँ पे चेक बैक कर लो भाई, सामान मान मिल सकता है कुछ। इसी के साथ हमें एलन बेग जो राइटर है, जो सारी कहानी लिख रहा है ना सारी, वो मिल गया है। अब देखते हैं क्या होता है। उसकी बहन का लोमड़ी लोमड़ी, ए लोमड़ी, तेरी बहन की लोमड़ी। मेरे पे गोलियां तो है ही नहीं, मैं करूं क्या? ये क्या बकचोदी यार, गोली नहीं है मेरे पास तो। अच्छा यहाँ आते दिन हो जाता भाई सडनली। क्या यार, क्या है ना, इरिटेट कर रहा है अभी गेम। इनसे ही बात कर लेता हूँ। वहाँ पे एक लोमड़ी सालो जिंदा, तुम यहाँ बात कर रहे हो लौंडो? कैसे लौंडे हो तुम साले, नाम रख दो। जिन्ना मेरे पीछे लोमड़ी आ गई है सुअर हो भाई, कोई तो सुन लो मेरी बात। एलन स्टोरी में लिख दे मैं शेर नहीं। यार करना क्या है? ए भगवान, अभी मेरे से मेरी गोली खत्म करवाएगी यार, शॉटगन की यार। भाई मर जा। ओ एक ही शॉटगन में मर गई। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा। कुछ भी नहीं, चूतिया बना दिया। रुक जा यहाँ पे ये कौन टांग के जा रहा है यार? ऐसे क्या चूतिया लोग हैं भाई, ऐसी जगह कौन टांगता है? You ready to go? हाँ एलन कहाँ है? अरे बैठा हुआ साला गाड़ी में। ले चलो इसको ब्राइट फॉल्स। Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. इसका मतलब समझे, वो लड़की बोल रही थी लोगन ड्राउंड होके मर गई थी और ये बोला कि अभी टायर स्लिप हो गया और ये कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है भाई। दोनों साथ कोई पीते हैं। इसका पति यही है केसी। केसी ले रहा मौज। केसी की बहू कहाँ है? केसी की शादी नहीं हुई।
हीरा एलन बेग। Is there anyone you'd like us to reach out अगले को to, समझ नहीं आ रहा, Mr. 13 साल से गायब हूं मैं। You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. काली आत्माओं ने उसके ऊपर हावी हो गई हैं। Tell us about the pages. You Robert had what के looks ऊपर like a उसको title नकेल page दिया। with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like इसे ही नहीं पता ये like a इसने लिखे nightmare. हैं। It doesn't make sense. याद कर, तू नहीं लिखे हैं। ये क्या? पानी। I remember. चल इसे याद आ रहा है। ये क्या? ये कहाँ आ गया? ऑन एयर। अबे क्या इमेजिनेशन के अंदर है क्या बंदा अपनी? मैं देख सकता हूँ लेट नाइट। I'm a talk show tonight. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. ये क्या? ये तो असली इंसान है। ये राइटर है, इसको सम्मान के लिए बुलाया गया है। ये कितना पगलेट राइटर है यार। Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! मैं रियलिटी शो देख रहा हूँ। It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. इसके पहले गेम की एंडिंग लाइन Well, थी। our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? इससे नहीं पता ये किताब इसने लिखी है। Detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's
very meta indeed. You see, मतलब ये असली में इसके किसी बुरे वर्जन ने लिखी है और इसको असली में नहीं पता. Desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah. अभी रिटर्न लिखा रहा है. Strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I have to expect them to disappear once this scene ends. ये हो क्या रहा है? भाई कुछ भी. अच्छा ये वहीं से उठाया. भाई बहुत गलत सीन है, बहुत गलत सीन है. वो क्या रहा भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक. इसने किताब लिखी. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. अगले ने कोई किताब ही नहीं लिखी. यहाँ से मैं कहाँ से लेके आऊँ? भाई मेरा भी दिमाग खराब हो रहा अब तो उसके साथ. पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है इस गेम में. लिटरली में ना क्या हो रहा मुझे नहीं पता. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. ओके भाई क्यों दुनिया क्यों हिल रही है? दुनिया क्यों हिल रही है? ये लौंडा जैसे अपनी कहानी बता रहा था भाई, ऐसी बताया था. खिलवा क्यों रहा है कहानी? ओके ये गेट नहीं खोलेगा. कोई आ रहा है, कोई आ रहा है. एंड पता चले ये सब जो है कहानी थी जो मैं गेम खेल रहा हूँ. भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. ये क्या हुआ? आ गई आत्मा. देखते रिचुअल वाली बकचोदी हो रही है बहुत भयंकर. ये क्या हुआ? Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. ये अपनी कहानी बता रहा है. जैसे वहां से उठा. Familiar. A ghost of a memory surfaced about writing here for countless days. इसने यहाँ बैठ के लिखी है ये किताब वगैरह. ये है चुतियापंती. I had been writing. Initiation. You must write to escape. ओके अब मेरे को कहानी लिखनी है क्या? Initiation draft 1. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them.
you must write to escape. अच्छा, कुल मिला के यही किताब लिख रहा है, ये प्लॉट बोर्ड है, ठीक है। इसको लिखना गेट बैक टू राइटिंग, ये लिखेगा अपने वहां से निकलने का। वो ये कैसे निकलेगा, तो ये उसके थ्रू निकलेगा, सागा के थ्रू, जब ये नाइटिंगेल को मारती है। आया थोड़ा मैंने क्रैक कर दिया हो, तो खुद ही राइटिंग कर रहा है। I didn't remember much. अच्छा, But I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. जो भी लिख रहा है ना, वो सब रियलिटी बनती जा रही है। Like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. जैसे इसने स्टार्ट अगेन कर दिया टॉक शो से, भी टॉक शो वापस पहुंचेगा। होप तो भाई तगड़ी चीज लिख रहा लौंडा। अब वापस पहुंच गया मैं टॉक शो में। सिंपल। Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. एलेक्स कीसी? Damn right, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! इधर से जा नहीं सकते। अब मैं वापस आ गया रियलिटी में, मतलब इंसानों की रियलिटी में। As the creator of the character, how do you feel about this? सूतिया फील कर रहा हूँ। I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? क्या शकल बना रहा He है? looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. पिक्चर ही बन गई। Roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. मतलब इसकी फिक्शनल कैरेक्टर की मूवी आ रही है और वो राइटर को चेज कर रहा है, और राइटर को मतलब सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं भाई। Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? कुछ भी हो रहा है गेम में, कुछ भी हो रहा है। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? हाँ भाई बता दे रास्ता कहाँ है। Mitä helvetissä? Of course, Tom. Tom? The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. हाँ भाई। Ja, mutta katsoppa, kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit.
It's in a shoebox. In the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. अच्छा बेसमेंट की मिल गई। अब मेरे को वहां से कुछ लेके आना है जो कि हमें कुछ करना है, मतलब कुछ तो वही बसड़ है। ओके चलो संभाल लेंगे हम। ये लैंप लेके आना है। The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. ओके अब मैंने ये कर लिया। I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It had the light now. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have. मैं कैसे कर रहा हूँ मुझे नहीं पता भाई, हो रहा है अपने आप। The light switch. Okay. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story. ये इस जगह से बाहर निकलने के लिए एक स्टोरी लिखा है लेकिन हर बार फेल हो जा रहा है। फलाने मटका बस चोरी चल रही है ये वाली। ये अपने आप को देख रहा है ये सब करते हुए। अब इधर जाना है। आ गया मैं बाहर फाइनली। The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. चलो भी उठा लो कॉल। Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? भूपेंद्र जोगी। Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of déjà vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. हमें सबवे पे जाना है स्टेशन पे। Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? कौन सबवे स्टेशन की बोली थी यार, मैं तो भूल गया नाम। सबवे पास, चलो सबवे का पास मिल गया मेरे को एक पड़ा हुआ। उठा ले, मैंने गिरा दिया था। केसी, अच्छा केसी बुला रहा है। Enter Caldera Station. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. यार इस गेम में ग्राफिक्स देखो यार, लिटरली। वहां में दिख रही है मेरे को लाइट, शायद वहां से लाइट लेके आनी है। हाँ आओ आत्माओं सालो, मेरे दिमाग के अंदर ही तुम मुझे बता है। सही जगह आ गया हूँ, फिर कटसीन चालू हो चुका है। What the hell? Alex Casey. Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey.
हाँ पता है। looking into a murder. ये मूवी में आ गया क्या बपन? What is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? क्या ये? ओए बंदूक भी नहीं मेरे पे। Stay here. अच्छा अच्छा, मेरी मदद कर रहा मेरी। मेरे को लगा मारने आ रहा है मेरे को। ये लौंडा बढ़िया, अपना ही तो कैरेक्टर है यार, मेरी मदद तो करेगा ही नहीं। हो गया कांड भाई, काम डल गया ऐसा, काम डल गया लौंडे का। अब मैं जाऊंगा फटी हुई में। मैं तो शेर हूँ भाई, शेर। मतलब अपना बंदा शेर है, मैं नहीं, मैं तो इंसान हूँ यार। भाई काम डल गया इसके, इसी का तो यहाँ पर। बंदूक बंदूक दे दो भाई, बंदूक 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 बंदूक। ओए Killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know shit. बस तू मर गया भड़ुए, और चला गया नेता बन के, हमें जान देता। Coming to you. मर गया पिल्ला मर गया। चलो भाई इसकी टॉर्च तो ले लेते हैं, हमें लाइट मिल तो गई, फ्लैश लाइट मिल गई, बंदूक भी मिल चुकी है। इसी के साथ हम काम डालने वाले हैं ज़ॉम्बीज़ का। An echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. आओ बेटा आओ, टिकट है मेरे पे, अब खुल जाएगा ये। ओके, अब मैं आ गया हूँ। Something about the station platform felt significant. काल्डेरा स्टेशन। It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. इसमें वाली वाइब आ रही है मेरे को। An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. अच्छा। He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The न्यू ghost of प्लॉट my एलिमेंट। fictional अच्छा हमें प्लॉट मिल रहे a हैं story भाई। thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark. The dark place Lizzie. reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. ब्लड ट्रेल को फॉलो करो भाई, ब्लड ट्रेल को। The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way भाई forward. टनल में चल दिया। अच्छा अच्छा, टनल है, यहाँ पहुंच गया मैं। यहाँ पे कोई टट्टी कर रहा होगा इंसान, भाग रहा होगा सारा लोटा लेके। ये रहे पैरों के निशान। भाई ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है क्या बंदा? गोली लगी है ऐसे पैर में। ओए मुझे डर नहीं लगा, मुझे डर नहीं लगा। I don't like the sound of that. चलो यहाँ का ही मैप मिल गया। मुझे लगता है इसी के साथ हमें ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। और यार अब मैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इस गेम को हो क्या है यार, पर मजा आ रहा है खेलने में। कुछ भी सही स्टोरी बन रही है। अभी हम निकल जाएंगे, होपफुली एपिसोड 3 में हम बाहर निकल चुके होंगे असली दुनिया में शायद। और गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्टोरी भी काफ़ी माइंड कंफ्यूजिंग है, तो इसको गेम को मैं स्टार्ट करूँगा। और चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ये एपिसोड देखिए और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कराना कराओ। बाकी अपन करते रहेंगे ऐसे गेम चालू, बढ़िया है। चलो ठीक है, बाय।